Students, we are continuing lesson number 5, holistic development. Holistic development means complete development, physical development, mental development and spiritual development. Healthy body. Children, healthy body is very much important because other two parts are depends on the healthy body. And keeping our body healthy depend on us. हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए और ये किस पे डिपेंड है कि हम फिजिकली फिट रहें? इट डिपेंड ऑन अस. If we take proper nutrition, do regular exercise, take proper rest, then our body become healthy. Personal hygiene is also very important. Children, proper nutrition means taking adequate amount of energy and other nutrients. As you know, vitamin, carbohydrate, minerals, fats, proteins, water, all these are we required in our food. Then we can just grow well. For our healthy body, nutrients are very much important. We should take such type of food that has a nutrients value. Also, regular exercise makes our body strong. We need proper rest also. Energy gives us the capacity to do work and other nutrients help our body grow well. They also protect our body from diseases. That is the why we should take a balanced diet. Children, in our food, we should have a balanced diet. And for a balanced diet, we know we should take vegetables, fruits, grains. We should not eat junk food. We should take care whatever we are eating. It should be just good for our body. Exercise is also very much important. It maintains the blood circulation in our body and makes our body strong. Physical fitness is also important and regular exercise is helpful in physical fitness. Work and only work can cause harm to our body. It may reduce our efficiency. Therefore, proper rest is also important. Early to rise, early to sleep, keeping body in a good posture, these keeps our body healthy. केवल हमें वर्क नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए. हमें टाइम पे उठना, टाइम पे सोना चाहिए. अगर हम ये करते हैं तो हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं. अगर हम फिजिकली फिट हैं तो ही हम मेंटली फिट रह सकते हैं. वी कैन थिंक, वी कैन डू समथिंग गुड इन आवर life. It reduces our stress and for that we need proper sleep. And correct posture is also important. How we are sitting, how we are walking, how we are doing the work. In all these, posture is also very much important. Personal hygiene is no less important. It keeps germs away from the body and protect us from the diseases. Personal hygiene include daily bath, brushing teeth twice daily, wearing clean clothes, eating fresh and clean food, trimming nails at a regular intervals. हमें अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए बच्चों. हमें टाइम टू टाइम जो है नेल्स को कट करना चाहिए. वी शुड ईट the fresh foods, otherwise we become ill. So food is very much important. Trimming of nails, because nails carry the germs, so we should take care that at regular intervals we should trim our nails. Always wear clean clothes. We should not wear the dirty clothes. We should brush the teeth properly and daily bath is also very much important. A healthy mind. Our brain is a master organ of our body as it controls other parts of the body. Mind gives us the power of thinking and memorizing. For holistic development, children, mental development is also very much important. And as you know, brain controls the other part of the body. Mind gives us the power of thinking and memorizing. Whatever we think on the basis of our mental power. And
It is a mind that gives us negative as well as positive emotions. Besides, mind gives us the power to differentiate between the right or wrong so that we may take proper decision. As you know, whatever we are doing, दैट कम्स फ्रॉम आवर माइंड थॉट्स. अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं हम जैसा सोचते हैं हम वैसा करते हैं. अगर हमें निगेटिविटी होगी तो हम कोई भी काम ढंग से नहीं करेंगे. इफ़ वी आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रांग, वी आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वी कैन डू द वर्क. तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़रूर आता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड बी मेंटली डेवलप्ड. But the wandering nature of mind sometimes distracts us from the proper path. The reason for this wandering mind is hidden within each of us. They are want of understand, attachment, aversion and attachment to life or fear of death. बच्चों कभी कभी हम नेगेटिव भी सोचते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू द रॉन्ग पाथ. वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है. वी हैव अटैचमेंट टू द लाइफ, फियर ऑफ डेथ. हमें अगर मरने से डर लगता है तो हम कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जो हमें नहीं करना चाहिए. वी विल नॉट थिंक फॉर अदर्स. अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, वी हैव अ डिसलाइक्स, देन ऑल्सो वी डू समथिंग रॉन्ग विद अदर्स. सो whatever we are doing also reflects whatever we are thinking. हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी सोच से भी मिलता जुलता है. These feelings cause the distress and invite waves of thoughts in man's consciousness. Mental laziness, doubt, carelessness, despair divert our mind. In order to overcome these distractions, yoga and meditations are necessary. Children, mental peace is very much important. Mentally laziness होगी, हमारे में डाउट्स होंगे, वी आर सैड, वी आर नॉट हैप्पी, डिस्ट्रैक्शन होगा, तो हम कुछ भी अपनी लाइफ में कर नहीं सकते. और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें योगा या मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए. दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. योगा विद 8 एस्पेक्ट्स: यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, samadhi. All these are useful because all these makes our mental, all these makes us mentally strong. They give us calmness. Okay, they give us inner strength. They give us positivity in the life. We become calm in our life. योग, मेडिटेशन, ये हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है ताकि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको फेस कर सकें. हम घबराएं नहीं, हम डरे नहीं. कोई भी प्रॉब्लम आने पर हम उसको देखकर भागे नहीं, हमें स्ट्रेस नहीं हो. वी थिंक गुड फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें. स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग आवर बॉडी एंड माइंड इन अ proper way. It helps us utilize our wisdom, intellect, power, energy in a positive direction and for the welfare of living beings. Children, spirituality means, as I told you earlier, connectivity with the God. We should think that why we are on the earth, why God has sent us on the earth, what is the purpose of our life. We should also think in this manner also. We should not only running towards the comfort zones for earning, for livelihood. केवल हमें कमाने में, आराम के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए. और ये तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे और तभी हम अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी पावर, अपनी एनर्जी का यूज़ दूसरों की मदद के लिए करेंगे, दूसरों के वेलफेयर के लिए करेंगे. In other words, spirituality teaches, guides us in a way that we can lead a purposeful and meaningful life. Meditation is an important health and spiritual exercise. We should do meditation. We should sit and think. We should control our breath
and we should just think whatever we are doing, why we are doing, what we should do. हमें मेडिटेशन करना चाहिए जिससे हमें समझ में आता है कि what is the use of our life, or maybe possible that we can just think for others. Our way of seeing the life will change. हम जो नज़रिया हमारा है जीने का वो बदल जाता है. हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर देते हैं. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमें अपने बारे में सोचते सोचते दूसरों के बारे में भी सोचना है. Yoga is an art and science of removing polarities between body, mind and soul, so that the practitioner of yoga may experience a state of universality within himself or herself. Yoga is also very much important. India had been a country of sages and saints, and they have always encouraged the people for spiritual development. It is a result of their encouragement that our country is a peaceful country in the world despite having a great diversity in a religion, caste, color and creed. Children, spiritual development is important, and as you know that our sage and saints spread the messages of spirituality. You all are familiar with the Vivekananda. He is also the greatest spiritualist from our country who has spread the message of spirituality in the world. It is the result of their encouragement that now the foreigners, the foreign country people are coming to India. They are understanding the values of India. विवेकानंद जी और भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स थे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का मैसेज पूरे वर्ल्ड में फैलाया, और उन्हीं के कारण बच्चों जो फॉरेनर्स हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो हमारे कल्चर, हमारी वैल्यूज़ को समझते हैं, एंड दे आर कमिंग टू आवर कंट्री ऑल्सो फॉर देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. So for a holistic development, mental development, physical development and spiritual development is important. No doubt spiritual development is the only way through which we can establish peace across the world. Children, you should also follow the path of holistic development. बच्चों, हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के थ्रू ही पीस फैला सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने साथ साथ दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को भी नुकसान हो. हम अपने लिए अच्छा सोचेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, एंड डेफिनेटली इन दिस वे वी कैन जस्ट स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस इन द वर्ल्ड. अर्निंग नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट नॉलेज अलोन इज़ नॉट इनफ टू शेप आवर लाइफ, society and country in a better way. We should always give value to wisdom and moral development. It is very much true, children, that with the intelligence, with the wisdom, we should also morally develop. We should develop the moral values in ourselves. We should have a better coordination between our heart, soul and mind for all around development. It is true. Knowledge help us to know how we can use nuclear energy, but wisdom help us to know how we can use it for the welfare of mankind. Yes, अगर हमें holistic development है तो ही हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. इट इज़ ट्रू चिल्ड्रन. लाइक हमें ये पता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ नॉलेज, लेकिन हम उसको दूसरों के वेलफेयर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन अस. दिस इज़ द रीज़न why our sages and saints advocate for the holistic or spiritual development of a man. If we are spiritually developed, mentally developed, we are physically developed, and there is a holistic development of us, then we will do good for us and for others in the life. Thank you.